Morning all. I welcome all the friends and seniors to today's webinar on GST annual audit and return on GST annual audit and return 9 and 9C for the financial 18-19 with practical case studies. I also welcome CA today's guest speaker, our CA Aanchal Kapoor ji. Before starting that, I request Aditya to start the suo motu. येष सुप्तेषु जाग्रति येष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनाद्यकश्चनाद्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता
Okay, good morning all. This month of August is very special for our country. We start the month with the Eid, followed by Raksha Bandhan, Jasnashtami, Pateti, Ganesh Chaturthi, Samatsari, Moharram, and Onam. Right in the middle, we had 15th August, our Independence Day. So today's speaker, we had CA Aanchal Kapoor ji. I request our speaker, our coordinator, CA Sachin Verma ji, to introduce the today's speaker. Before that, just one small announcement. Today, our deputy conveyor is not well, so he is not joining us. Instead of that, the Aditya will take the position as a deputy conveyor. So for this meeting only. So I now request CA Sachin Verma ji to kindly introduce our today guest speaker. Yeah, thank you, Amish. Good morning and warm welcome to everyone. I am CA Sachin Verma. Today's topic is on GST annual return, that is GSTR 9 and 9C for FY 2018-19. As FY 18-19 is only the second year of GST annual returns and audits, I believe today's session will definitely bring fresh perspective to it and help us comply with it in a better way, and I'm looking forward to it. For this, I am glad to have this opportunity to welcome and introduce our speaker for today's topic, CA Aanchal Kapoor, on behalf of Andheri Oshiwara Study Circle. CA Aanchal Kapoor is a practicing chartered accountant for past 10 years in the field of direct and indirect taxes, including appellate work. With special focus on GST, she has done extensive study on subject with many certified courses, and GST is one of her core competency areas. Since the inception of her academics, she has been placed in the merit list at various levels as a rank holder in CA and gold medalist in graduation. In pursuing her professional career in GST, she is practically into this field and has delivered various seminars on GST on various national platforms across India, including Punjab, Delhi, and Maharashtra. She has authored many articles on GST, published from time to time in various journals like AIFTP, Tax Management India, etc. With this, I request CA Aanchal Kapoor to please take over from here. Thank you. Thank you so much, Sachinji. And I indeed thank Andheri Oshiwara Study Circle to make me a part of this and to deliberate on this platform. Thank you, Amishji, for this opportunity. Now, a very good morning to all of you. A very good morning. Here, though, the weather is very fine. So I hope all good over there also. Yes, Am I? everything's fine. You're audible, Okay, ma'am. okay. Yes. Okay. So with this, this session success does not only depends upon to me, it depends upon to you also, because energy level is required from both the sides. So whenever we play with figures, we get lost into it. And today's session is not going to be theoretical. It's all more going to be practical. So you people have to be with me for another, say, it's going to take 2 hours. So with this, I just, without taking much of your time, will be starting the deliberation. Sir, can I share the screen, please? Yes. Yeah, is it fine? Is it visible? I just turn it to be the slideshow. Yeah, is it fine, sir? Yes, visible. Okay. So let's start with it. We are on GST annual returns, 9 and 9C. We have already done the annual returns for the year 17-18, right? So 17-18 may we have done, but what is important in 18-19 is how to deal with the effects, spillover effects of 17-18. We will be doing it with the case studies. I will be sharing a few Excel sheets with you also, through which we can go into that how easily Excel can be used to get hold of the data, right? So with this, I start with it. So what are the things, what are the points which must be kept in mind in order to, when we do GSTR 9 is first, remember, if you have a turnover of above 2 crore rupees, then you are required to mandatorily file GSTR 9. I'm not talking about 9C. Please keep it in mind that GSTR 9C has been been extended to 5 crore and not GSTR 9 limit. So it is still 2 crores. Above 2 crores, it is mandatory, right?
Now, all GSTR 1 and 3B must be filed. If any of your GSTR 1 or 3B is missed, then you cannot proceed further, right? You cannot file the returns. Yes, a query came to me in this point also, that whether it is required to file all the GSTR 1 of other years also. No, not so. It is required for the financial year 18-19 only. Next, even if GST number is surrendered, please don't forget to file your GSTR 9 or 9C if you are exceeding the limit. So although the number is surrendered during the year, still we are required to file it. Well, yes, major data in annual return is auto-populated, but it does not mean that we cannot change it. It marks something in red. It doesn't mean form is getting hot. No, it is just giving you an indication. It is just giving you an indication that the figures you are editing are getting edited more or less than 20%. Means you are either reducing or enhancing the figure for more than 20%, right? So, sir, why this precaution has been introduced? Because initially what happened in 3B also, like it happened in my office also, I was to feed a figure of 2.5 lakh. The staff came to me and said, ma'am, 10 extra lag gaya, ya 10 kam lag gaya. So it's a safeguard being provided that you are editing that particular column. Last time I got a few queries कि हमें तो फॉर्म बन के आया था, हमने as it is फाइल कर दिया. सर GSTN डाटा उठाता है GSTR 1 से, because GSTR 3B में bifurcations are not that available. So whatever data is available with GSTN from GSTR 1 and GSTR 3B, so they use that particular data to make the return. Right? So whatever is available, they're just putting it. But that is only an indication of the data. We can edit it and we should edit it to the correct form. Amish ji, is it fine that should I use English or is it okay with English only? Anything you're comfortable with. No issue. Okay. Now, let's come to the next point. The next point is, once GSTR 9 is filed, it cannot be revised. GSTR 9C can be uploaded only after you file GSTR 9. So first step is GSTR 9, then you can file your DRC 03. Sir, DRC 03 can be filed before or after. So many a time this question arises, which I have addressed here. GSTR 9 is to be filed for every GSTN. Remember, if you have multiple branches, sir, limit is based on aggregate turnover, right? So for aggregate turnover is to be checked pan-India wise. But once you think that once you see that the limit has been crossed, then in that case, each branch, separate 9 and 9C, both have to be filed irrespective of the limit. Even if your branch has no outward supplies, still GSTR 9 or 9C is required to be filed if you have crossed the threshold limit for the entire entity, right? Now, moving ahead, GSTR 9, 9C, additional liability can be created payable through DRC 03. Yes, here is a litigative issue that arises. Sometimes, if you see the form has an instruction that in case of annual return, whatever liability you are calculating must be paid through cash only. Sir, this instruction is neither in the acts, this restriction is neither in the act nor in the rules. It is being introduced by way of the form. So if you feel, please bind it, if you feel that you can afford to have a litigation, then you can use the credit also for the payment of it, provided the credit was available at that time also for period for which the liability belong and is being carried forward throughout. Right? Agar us time pe credit nahi tha and you want to utilize that credit, then that argument cannot sustain. But as of now, as per the instructions of the form 9 and 9, it is clear-cut mentioned that whatever liability originates on account of at the time of filing of annual return, that must be paid through DRC 03. Right? So, jab hum DRC 03 mein jaate hai, we have to select annual return, and when we select annual return, it gives only the cash option.
But if you want to go for utilization of your credit, then the option must be changed from annual return to 73(5) voluntary filing, right? Moving ahead. Sir, what about the assessees who are having a turnover, or taxable persons having a turnover below 2 crores or up to 2 crores? Sir, in that case, it is not mandatory to be filed. But let me tell you, the return with the auto-populated data shall be deemed to be furnished on the due date. It means, अगर आपको लगता है, it's a word of caution, it's an advice that if you feel that 2 crore से नीचे वाले assessee पे भी आपकी कोई गलती हुई है, कोई service provider है, certain things have not been properly disclosed for, which can create a hurdle in when we go for the assessments, then in that case you can file it even for the assessee below 2 crores and it should be filed, right? So GSTR 9 and 9C is the last chance for that year to correct your errors. So you must be careful that whatever discrepancies you feel like must be taken care in GSTR 9 and 9C. Now, what are the prerequisites? So prerequisites means, see, what happens when we are going to start the audit, we sometimes don't get from where to start and what are the things we are required. So this is a small prerequisite list which you can either give to your accountant, you can give to your staff to provide it to you, so that it is, कहते हैं ना, सब शुरू करने से पहले सब कुछ सामान तो इकट्ठा कर ले. So वो सामान क्या इकट्ठा करना है, that we are talking about here. Audited financial statements, you must ask your client, the accountant, the staff to provide you when you are going to start with the audit. Audited financial statement, make sure it comes with all the notes and schedules so that we can refer to the balances wherever required, right? Then even the branch-wise bifurcated statement are required. So audited financial statements are entity-wise, but GST is to be filed, 9 and 9C are to be filed branch-wise. So a consolidated as well as the bifurcated financial statements are also required. 26 years, so third party information. आपने service tax में regime में भी you have watched that third party information 26 years has been taken as the base for issuing various notices. So मेरे ऑफिस में तो ढेर था 26 years के basis पे जो service tax के notices issue है. So that might be in your office too. So please be careful that, see, you have to check prudently. You are going to sign it. Although they have changed the view from true and correct to true and fair, but still true and fair means the things which are available with you should be watched for. And so income tax returns, your corporate records, your cost records should be reconciled up to particular level to the extent possible. So 26 AS is the base document from where the incomes can be picked from. Then your books of accounts, ledgers, so that you can check the liability ledgers, credit ledgers as per books of accounts to check in case your balances are not matching and to make the reconciliations. Cost records, corporate records, I already told you. Yes, user ID and password. So user ID and password, you must ask your client to provide you if he's an outsider. So then in that case, you will be taking up a copy of 17, 18 annual returns. It is like an audit. We take the previous auditor report, GSTR 3B, annual summary, and GSTR 1 for the year 18-19 along with your credit and cash letter. So now we have collected the material. But sometimes when an audit comes to our mind, or up to वैसे 1 year has crossed, not 1 year, rather it ended in February around only, but still we forget certain things. So I would like to make you, what you should do, you people must make a checklist. I here for you have summarized quick 20 points. I have summarized here quick 20 points that can be referred. But other than that, you must maintain the list of all the points that must be considered while doing the audit. So let's have a quick look on the 20 quick points. What are those? First, reconciliation of income and receipts as per P&L account as per GST returns. The first and foremost step. Your income as per P&L account and your income as per GST returns should be matched. Abhi hum dekhenge with the help of Excel sheets how we can get a grasp of all this data, right? RCM.
Expenses liable to RCM, including the foreign payments. Sir, RCM provisions must be watched for. May it be GATA, may it be director remuneration. Now you have got almost a circular on director remuneration, but to be in light of that, you can check the previous year also, because the law was amply the same one. There is no change. So expenses which are liable to RCM, including the foreign payments, should be watched for. Then bifurcation of expenses on which ITC is claimed. Sir, whenever we go to ITC, it has always been technical. Iska lena correct hona chahiye, only then it will be beneficial. Otherwise, it can lead you to more troubles. So the provisions of section 16 along with the provisions of section 17(5) must be watched for. If the particular credit, sir, just say, जो motor vehicles 13 sitters तक allowed है, works contract and goods and services used for construction should not be availed. Medical insurance, health insurance of the employees even is not allowed. Life insurance not allowed. The goods which are destroyed during the year, please do check if there are losses being booked, if there are insurance claims. So whether the provisions of 17(5) have been duly complied with or not. Criteria of 180 days. Sir, one of the gray area which is generally not being complied with by the parties. So 17-18 mein to, even then we tried to get it complied from the parties, but 18-19 was really a havoc for this, because GST provisions cannot determine the criteria of realization of creditors. But as the provision is so there, so 180 days point must be checked by you. And in case client has not, you must advise them for the purpose of reversals and interest payable thereon. But if the client is not ready, at least you should give a qualification to that aspect. Sir, 180 days, sometimes we also share that there is an escape route to this also, as it refers to the rule pertaining to 180 days refers to GSTR 2, which is not in picture because it has not come. So we sometimes escort to this escape route also, that as GSTR 2 is not there, the mechanism is not available, the rules are not being provided correctly, so it is not possible to be followed. But still, as of now, 180 days criteria is applicable. If the creditor is not being paid according to it, it must be reversed. And so the same should be disclosed at least in your qualification in 9C to safeguard your skin. Now, moving ahead, checking of calculation of refund claimed during the year. Sir, if your assessee has claimed any refund, so please share that the refund should be correctly calculated. Input services, and should be correctly bifurcated. Nowadays, we are also talking about, in case of refunds, the input services are available as a refund. But sir, that has a limited scope and most probably will be challenged in the apex code. So as of now, you must check the provisions of section 54, that whether if the assessee has taken any refund, the provisions have duly complied with. I just share a case with you. A party came to me. The criteria of inverted duty structure was not met for. Sir, in case of inverted duty structure, the rate differentiation should be there, and it was a cement industry where the rate differentiation was not there. Matlab input ka rates zyada nahi tha, valuation difference tha. Sir, when there is a valuation difference, it does not qualify for refund. It only qualifies when the rate of inputs is higher than the rate of output. So the assessee was not eligible for the refund, but still the refund was claimed and applied for. So certain sort of this points as regard if the refund has been taken, then whether the provisions of section 54 have been complied with, whether the rates on outward supply that are being charged is based upon HSN and SAC. Right, that must also be taken care of. Sir, 17-18 में तो बहुत ज़्यादा rate fluctuations थी. Even in 18-19 there were certain rate fluctuations. So you must check whether the client has appropriately done it. For example, I take an example of say the 3-piece dupatta set. So a particular circular has come that it must fall in that particular category of fabrics. So whether the HSN or SAC have been duly applied for and the rate has been charged accordingly. Reconciling the balance of advances. Yes.
advances for 18-19 are taxable only in case of services. Only in case of services. And sir, what you have to match? Unadjusted advances, because जिन advances का voucher जो invoice issue हो गया होगा, that would have moved to the invoice category, B2B or B2C supplies. So whatever is the balance sheet unadjusted closing balance, that should ultimately match with your advances figure. Right now, moving ahead, so GST balance, closing balance as per portal and balance sheet should be matched so that you can trace out whether the differences are in input or output. But practically saying, सारी जगह ही difference निकलते हैं. When I say to my staff कि ये आपको changes करें, वो कहते हैं मैम यहाँ पे भी point में difference है, यहाँ भी difference है, यहाँ भी difference है. Sir, it comes due to many reasons. Sometimes it's from client side. Sometimes it's for non-availability of data on appropriate times even, right? So we just file on the basis of information we are getting from the accountants and the party. So accordingly, various mismatches come which have to be dealt in 9 and 9C. Next, outward supplies as exports. If your client has taken the benefit of exports, then you must check that the provisions of exports have been duly complied with. Let me take an example. If your client is dealing in certain sort of commission from foreign universities, then please make it a point. It is not a export of service, because the place of supply in this case has been held as per the provisions of 13(8), which is in India, the place of service provider. Hence, the intermediary, as per the provisions of 213, that person qualifies to be an intermediary, place of supply as per 13(8), and the person who is receiving commission from foreign universities, although he is bringing foreign exchange, but still is not to be taken as export of service, because the provisions of 2, 5, and 6 are not met in that case. So you must take in mind that if your client has taken the benefit of exports, then the criteria, the rules related to exports, the LUT provisions, etc., all must be complied with. In case of services, you must check the payment must be received in foreign currency. Although this provision, the relating to foreign currency, is not applicable in only those countries like Nepal or Bhutan, where the RBI specifically exempt those countries for receipt of foreign exchange, right? Moving ahead, addition of all expenses. Yes, valuation provisions must be checked for section 15. If your client has given any sort of transit insurance, freight, नीचे bill में charge किया, so make sure वो add करके GST का rate charge हुआ हो, and it is taken as a composite supply. अगर supplier recipient के behalf पे कुछ खर्चे supplier ने issue कर दिया, which the recipient was required to do. For example, if I say the particular sort of patches were to be put by the recipient, but the supplier has incurred that expenses on the behalf of recipient, even that is to be added. For example, in case of construction, if I say the supplier provides the cement and the other material, so please make it sure section 15 says if any expenses are recovered by the supplier which are incurred on the behalf of recipient, must also be added to the valuation provisions. Then, sir, to check the GST audit, the documents are the base. What are the documents? You can refer to section 31, may it be tax invoices, debit, credit notes, self-invoices, payment vouchers, refund vouchers, all must be checked. If you have received advances, the receipt voucher must have been issued. If you have refunded the money, the refund voucher must be there. And sir, in the maximum of cases, we many a times find that the requisite documents are like refund voucher, then your receipt vouchers, and even the self invoices are not being generated in case of RCM. So please make it a point or a qualification in your report if you are finding any sort of lack in the documentation as per section 31. Then very, very important point, we'll be taking in aggregate turnover also, schedule 1 supplies. So turnover check karne ke liye and otherwise also schedule 1 supplies must be considered by you. Now I will be taking up schedule 1 supplies in depth. So just a hint here. 2A reconciliation.
So for 1819, the rule 36.4 came into picture a bit later. It came in 2019, right? But 2A was never although considered as a base document as per the provisions of 16.2 also, क्योंकि ये चार conditions का part as such नहीं बनता है. But still, it can be used as an important tool for checking your client's data. सब तीन तरह की situations हो सकती है. 2A says either your data is present in 2A, आपने bill upload नहीं किया. Your data is not there in 2A, you have entered the bill. Second situation. Third, the figures in as per 2A and your books of accounts are not matching. So in all the three conditions, sir, I suggest there is no criteria for matching the total value of 2A, which table 8 is showing. Rather, we do it on invoice basis by applying the pivot table, or now many softwares are also available where in bill the data matching bill to bill wise, then collecting it on the basis of party wise should be checked for. Sir, although I should not say it on this platform, but still I share with you 2A कई बार क्या होता है, पार्टी सेज अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये माल पक्के में आया हुआ है, सो वो और सामने वाली पार्टी ने उसको एंटर किया होता है, that gets reflected in your 2A. So please be careful as to those invoices which are reflecting in your 2A and are not entered by you. Because later on department can come up with that these were your purchases, why you have not entered it, right? So 2A is an important tool to keep a check on the whether the books have been correctly fed, nothing is being concealed for. So 2A matching should we always do it, so we do it on at the time of income tax audit itself. So appropriate adjustment in the books of accounts can be taken care with by taking 2A into reconciliation. Especially sir, in case of एक चीज और मैं आपसे share करूंगी is regarding fake invoices. आजकल there are numerous cases of fake invoices. So please bear it in your mind that 2A is never a conclusive proof that your client has paid the tax. And you will find in most of the fake invoicing cases 2A में credit आ ही रहा होता है. वो क्यों आ रहा होता है? सामने वाले ने GSTR 1 भरनी थी, सामने वाले ने GSTR 1 भरनी है, वो भर देता है, 2A में reflect कर जाता है, although he may or may not have discharged the 3B. So as a result, 2A reflection is never a conclusive proof. Sir, in case of fake invoices, na, or everything is able to be proved by the person concerned. Payments are generally through bank accounts. Samne wale ka GST is always available. The other person is always registered. Because you are ultimately passing the credit. You have the invoice, tax invoice also. But what is the most important thing which we lack to prove is the receipt of goods or services. So if you are not able to prove the receipt, you cannot come out of this mess of fake invoice. So if you are able to prove that the goods have actually been received, so you are through it, right? So e-way is also one of the documents. Sir, yesterday a person asked me, can we do matching of e-way? Sir, e-way data is downloaded only for 5 days at a stretch. So what we can do, it is not possible to download the entire year in by bifurcation into 5 days each, in a slot of 5 days each. So what does I suggest is you can do a sample test check. Sir, एक बारी goods पहुंच गए, so e-way bill के provisions or penalties hit नहीं होते हैं, but it gives you a thing to check whether the goods have actually been received or not. Right? Whether the goods have actually been received or not. So in that case, e-way bills can be checked for and can be referred to. What I am discussing with you is overall criteria that from where you can check the things, जहां से गलतियां हो सकती हैं और कल को department उसको plug कर सकता है. So receipt of goods is also one of the area. 2A and e-way bill can be the tools to gather the areas where there can be flaws. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर टर्नओवर में भी ऐड कर लेना. आपको डिप्रिसिएशन चार्ट चेक करना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स का सेल चेक करना है, एंड इफ यू फील दैट द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर. मूविंग अहेड, सर इवन इफ योर GSTN is cancelled, even if your GSTN cancelled, still you are required to
go for the this GSTR 9 and 9C filing as if the limit is exceeded. At the same time, you must check that the final return GSTR 10 must be filed. So बहुत लोगों ने initially GSTR 10 miss की है in case of cancellation. So if that has been missed by your client also, that the notice, the qualification with this respect should be mentioned. Cross charge between branches. Sir, if a client has multiple branches, then the cross charge provisions must be checked for, right? Or especially when the other branch is not able to take the entire ITC. अगर वहाँ पे कुछ exempt goods का dealing है, so you must check that the whether cross charge has been properly done or not. Now we come to the rule 4243. So 4243 का application most of the cases में आता है wherever there are exempt supplies or schedule 3 supplies. So please make sure that the provisions of section 4243 must be met for. Trust me, initially it looks a bit tough, but these are very, very simple. We also use, I have made standardized sheets for rule 4243 where my staff puts in the data and I can easily check it that whether 4243 has been applied for. It is applicable even in case of departmental stores because they are dealing in exempt and taxable products. It is applicable in case of rice sheller industry also where you deal in branded and non-branded, right? So various industries are get covered by the provisions of rule 4243. At the same time, please do check whether the stock records have been maintained and do reconcile the qualification given in the income tax and corporate records to the same effect. If it is not there, a note to this must be mentioned. So these were the 20 quick pointers. You can add more points into it also, as in the year 2018-19, the TCS provision and the TDS provisions were also brought in. So please make sure that the relevant provisions with respect to that you need to check. E-way bill provisions, as I've not mentioned that in list. Sir, in this way, whenever you keep on doing the audit, this 20-point checklist will keep on extending and keep on adding so that at the time of sir provision हमें पता होता है. But where we lack is the point that when we are doing the audit, we sometimes skip. So in order that we should not skip and to give a client, always we used to follow the same strategy in case of statutory and tax audits also. So a checklist must be maintained, right? Now, coming towards the legal provision, we'll not be taking that in depth. We already know section 44 and rule 80 deals with it. And who are the persons who are not required to file GSTR 9 are ISD, person paying tax under section 5152. Here I would like to bring a point to you. Sir, e-commerce operator are of 3 types. Firstly, divided into 2 types, services and goods. Let me tell you, it is mainly of 2 types. One is for goods and one is for services, right? And one is for good and one is for services. Sir, in case of goods, the TCS is always applicable, provided the person is a registered person. It is Flipkart and Amazon, F or A. But in case of services, there are 2 types of e-commerce operator. One are of 9(5) and another are other than 9(5). Sir, जो 9(5) के e-commerce operator होते हैं, इसमें 3 cases are there. One, example से चलूंगी, housekeeping के लिए your urban clap, aggregators like Ola, Uber. Third category is your hotel booking, MMT. So MMT only when the hotel is a small service provider, means below 20 lakhs for that. Sir, in 3 cases में, these are 9(5) operators. When these are 9(5) operators, government कहती है हमें driver से, हमें the cleaner से, हमें ये person से कुछ नहीं लेना. We are not going to go to them. For us, the aggregator, the housekeeping provider, Urban Clap, Ola, MMT, they are the deemed suppliers. When they are the deemed suppliers, they are stepping into the shoes of the supplier, then the question of TCS does not arise. Then the question of TCS does not arise. But other than these 3, example, Zomato, Swiggy, and other operators,
which are not covered by 9(5), in that case, the TCS provisions are applicable. So it means it is saying to whom GSTR 9 is not to be filed. So थोड़ा सा हमने e-commerce operator को भी summarize किया that goods and services, along with the form, I will be taking up some legal points also with you. So e-commerce operator was also one of them, along with the checklist we discussed today with the tinge of section 54 provisions also. So these are the persons who are paying tax under 51, 52, does not come under GSTR 9 provisions. They are not required to file GSTR 9. But remember, these three operators of 9(5), they are not covering, they are not covered by the provisions of section 52 TCS. Hence, for them, GSTR 9 will become applicable. And for them, GSTR 9 will become applicable. Now, moving ahead, other than that, who are the persons who are required not to file this are CTP, NRTP, non-resident taxable person, जिनका CAG के अंडर ऑडिट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज. Then OIDAR, they are not required. So these two were the additions being made later on. Priorly itna hi law tha. So they are not, for them GSTR 9 is not applicable. Apart from it, for composition, GSTR 9A was applicable, but because it is below the threshold limit, we are not filing it right now. Every e-commerce, sir, ye wale. Section 52 वाले जो TCS collect करते हैं, but your Ola, Uber and your 9(5) operators will not come into this category, who are required to have TCS at section 52. For them, the form is 9B, right? So moving ahead, yes, the limit of 9C has been increased to 5 crore. I will be taking you through for it. So, you know, section 35, 44 and rule 80 deals with the provisions of 9C. Now, what is the limit? So by virtue of notification 16/2020 dated 23rd March, the limit was increased to 5 crore, but only and only for 9C, and for the others, the 2 crore remains for GSTR 9. So ultimately, I will say, if you are up to 2 crores, this is also optional and this is not applicable. I have written the optional. If you feel any errors below 2 crores, that must be filed. If you are between 2 to 5 crore, one is mandatory, another is not applicable. And if you are above 5 crores, both are mandatory to be filed. So please make a list of your clients falling in all the three categories, so that you can start analyzing what is the volume and how it's to be dealt with. So ना filing, अब हम सबसे पहले पूछते हैं इसकी penalty क्या है, इसकी late fee क्या है. So late fee is ₹100 per day. Into 2 means 200 per day, that we have also paid in some of our cases in 17-18 also, and with a maximum cap of 0.25%, that is 0.50% of the turnover for GSTR 9. So GSTR 9C ke liye we sometimes refer that the penalty under section 125 can be levied. But sir, for levying the penalty under section 125, mens rea means a bad intention must be present. So directly 125 cannot be invoked for, but if it shows that there is some sort of fraudulent intention, then the provisions of section 125, 50,000 rupees, 25,000 each can be invoked, right? So this was the points, and everywhere we are referring to aggregate turnover. So the provisions of aggregate turnover are contained in section 2.6. right? 2.6 में इसके provisions referred for है. This is to be computed on all India basis, as I already told you. But make sure, sir, very important, aggregate turnover GST के according calculate करिएगा. Taxable supplies भी आती हैं, exempt भी आती हैं, nil rated भी आती हैं, non GST supplies भी आती हैं. Even if you are a petroleum or an alcoholic dealer. So alcohol में the alcohol for human consumption one is dealing in, liquor business one is in. So even then the non-taxable turnover has to be added. Exports, interstate supplies, along with it, sir, income tax की turnover या corporate records की turnover you cannot directly pick.
You must, sir, उसमें branch transfers cancel हो जाती है, but for the purpose of calculation of aggregate turnover, you must check the branch transfers. Sir, many of my clients have just crossed the limit of 5 crores because of this provision of branch transfers. So those who are on brink clients, so you must check that the provisions of GST like branch transfers, transfers from principal to agent, that is also to be taken owing to schedule 1. मैंने कहा था I will come to schedule 1. So all these, this is also schedule 1. So all those supplies, even your permanent disposal of assets, अगर आपकी बैलेंस शीट में depreciation chart में asset discard हुए हैं, I'm not saying even sold, I'm saying discarded, for which you have not charged anything, even then those owing to virtue of schedule 1 are liable to be taxed and will be the part of your aggregate turnover. राइट, बट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर जिसपे इनवर्ट सप्लाईज पे हमने आरसीएम पे किया है वो काउंट नहीं होंगे. सर व्हाट इज आरसीएम? इट इज नॉट योर सप्लाई एक्चुअली, it is somebody's supply. You are just discharging his liability, so that is not to be considered as a part of your aggregate turnover, but schedule 1 supplies will be considered. So here are certain points. Schedule 1 supplies should be considered. Capital goods sales, so please make sure that you take the depreciation chart and deal accordingly. In case of persons covered under rule 32, yes, forex dealers, air travel agents, all these, sir, इनका separate valuation criteria rule 32 में laid down है. So इनके लिए आपको इनकी एग्रीगेट टर्नओवर ऐसे 1% है, लाइक इन फॉरेक्स डीलर. सो आपको 1% जब हम वैल्यू भी फीड करते हैं ना सर रिटर्न फाइल करने के टाइम, व्हेन आई हैव अ few forex dealers, so whenever we feed their value, we just take the value as 1% as the value of their supply and then we charge the tax. So even then for the purpose of aggregate turnover, that valuation, as an air travel agent, it is 5% commission is being taken. So that valuation should be considered as the part of aggregate turnover. So this was the criteria for aggregate turnover. Now we come to GSTR 9. Hope, can I see in the chat box, it is not just crossing our heads and we are enjoying it, because we are moving now to the technical part, apart from the discussion on this. So can I have a few yes, please? Okay, Aditya ji, yes, Sachin ji, yes. So let's move to GSTR 9. So many yes, we are moving further. Sir, GSTR 9, I will not be taking the form in them. We all are aware, but I will be taking through a drive-through from these parts. Why? Because so that you will be able to understand that how we have to comply with its provisions. Now, coming towards it, sir, this GSTR 9, so please be with me. I will be checking the chat box in between. Queries I will be taking on a bit later, but if you are feeling that the point you have missed somewhere, you can please put it in the chat box. Now, coming to it, we have 6 parts. So 6 part has been made optional. 6 part has been made optional, right? So we'll be not taking that in depth, but otherwise, part 1 is just your basic information. Now we are concentrated on these 4 parts, 1, 2, 3, and 4. The most important part. So please do remember the tables with me if you want to go through properly through this spillover effects and what to show and what not to show, right? So these 3 parts, सर ये आपका डाटा कैप्चर करते हैं ओनली अप टू मार्च 19, यानी 18-19 के लिए 18-19 की रिटर्नों में, मार्च 19 तक की रिटर्नों में, यानी मार्च 19 की रिटर्न which would have been filed in April, तब तक की जो रिटर्न्स है सिर्फ उसका डाटा कैप्चर करते हैं. लेकिन as per the provisions of section 16(4) हमें टाइम पीरियड मिलता है सितंबर 19 तक की रिटर्न का करेक्शन करने के लिए. हमें टाइम मिलता है सितंबर 19 तक की रिटर्न का डाटा कैप्चर करने के लिए. सो देन इन दैट केस, अगर आपने अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 तक कोई एडजस्टमेंट किया है, दैट विल गो टू पार्ट 5. So this is the basic funda which one must remember. May it be output, may it be input, may it be tax paid details. तीनों
अप्रैल 18 से मार्च 19 तक की जो रिटर्नों में चला गया वो इन तीनों में आएगा. जो एडजस्टमेंट्स pertaining to 18-19 आपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में की है, that will form part of part 5. Right? Now let me come towards it. Sir, अगर हम भी नॉर्मल बात करें तो क्या पूछेंगे? भाई आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, टैक्स कितना पे किया. सो सिमिलर वे दीज 3 tables have been deducted. आउटपुट क्या है? 2 हिस्सों में बाइफिकेट करना, जिसपे टैक्स पे करना है और जिसपे टैक्स पे नहीं करना. टेबल 4 टैक्सेबल, टेबल 5 नॉट टैक्सेबल. ITC क्या है? टेबल 6 and टेबल 7 and टेबल 8 deals with it. 3 tables 6, 7, 8 and table 9 contains the information of matching payable with the paid. Payable with the paid through ITC and paid through challans. So this is the entire table, and this table capturing all figures done after March 2019 pertaining to 1890. Right? So let's move ahead. The part 1 I'm not taking with. Now coming towards part 2. Sir, part 2 में सबसे पहला ये जो cloud or the call out I have taken here is what it refers to. Sir, table 4 का basic criteria है जो आपका 18. सर एक तो बात याद रखिएगा, टेबल 4 में सिर्फ 18-19 के परटेनिंग डाटा आना चाहिए. इसमें कोई भी 17-18 के इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए. राइट? ये टेबल आपकी बुक्स की लायबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, बट दिस टेबल इज टैक्स ड्रिवन. टैक्स ड्रिवन मींस टैक्स पे किया है या करने वाले हैं तो ही इसमें फिगर डालेंगे, अदरवाइज नहीं. ऑलरेडी टोल्ड, इसमें सिर्फ वही आएंगे जो मार्च 19 तक की रिटर्नों में होंगे. जो करेक्शंस आपने मार्च 19 के बाद की हैं वो इस टेबल का पार्ट नहीं बनेंगे. सो अल्टीमेटली सेइंग दिस टेबल विल कंटेन द डेटा जो आपने 3B में दिखा दिया फ्रॉम अप्रैल 18 टू मार्च 19. सर मार्च 19 के बाद जो 18-19 का दिखाया वो नहीं आएगा, वो आगे पार्ट 5 में डील फॉर करेंगे. प्लस जो कहीं नहीं दिखाया, क्यों? उसके लिए अब आपने DRC 03 भरना है. सर आई चोज 3B because I already told you table 4 is tax driven and GSTR 1 is never tax driven. GSTR 3B is based upon the tax paid by you. So ultimately saying, if I refer to it, is what? These two things. Data as per CSTR 3B, जो भी 18-19 से pertaining मार्च 19 तक आप डाल चुके हो, प्लस जो आज तक कहीं नहीं दिखाया. एग्जाम्पल, क्लाइंट कम्स टू मी, सेम आपकी तो कमीशन थी, वो कहता नहीं मेरे पर्सनल अकाउंट में थी, मैंने पे नहीं की. आई सेड यू आर अंडर द सेम पैन. सो इफ यू आर अंडर द सेम पैन, आपको जो भी कमीशन आ रही है आपको उस पर टैक्स पे करना है, और उसको लगा ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, whereas the particular supply was taxable. You are now checking it out and finding it कि आपकी बुक्स में एक इनकम है जिसपे आपने टैक्स पे नहीं किया. Now he is required to pay it. He is required to pay it through DRC 03. So जो लायबिलिटी मार्च 19 तक की रिटर्न्स में दिखा दी या प्लस आज तक कहीं नहीं दिखाई, वो यहाँ आएगी. जो अप्रैल 19 से सितंबर 19 तक 18-19 की दिखाई है वो पार्ट 5 में जाएगी. सो अब इसमें डाटा कैप्चर कैसे करना है? सब B2C सप्लाईज के केस में वो कहता है सब कुछ नेट दिखा दीजिए, एवरीथिंग नेट, डेबिट क्रेडिट नोट नेट, योर अमेंडमेंट्स ऑल्सो, आपने कोई करेक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर. सर ये कौन सी करेक्शंस करता है? मैंने पहले बोला ये एंटायर टेबल मार्च 19 तक ही बेस्ड है. सो द करेक्शन say pertaining to August 18 done in September 18 or in January 19 within the framework of the financial year will be taken here only. Done after that up to September 19, second half will not be considered here in this part. Right? Now, B2B supplies are to be taken as gross supplies. But an option was given in the month of November 2019, which referred that if you have any difficulty in reporting,
Sir, what is difficulty in reporting? I cannot say. If you feel like, but according to my advice, we should not consider it and should be doing it gross here, and amendments and debit or credit notes for B2B should be shown separately, because it refers to if you have any difficulty in reporting, that can be done, then you can put here the figure on net basis. So it has given you an option. Sir 4A में रेफर ही नहीं किया, सिर्फ 4B to 4E में रेफर किया. क्यों? 4A तो पहले ही नेट था. 4B के केस में हम यहाँ ग्रॉस फिगर फीड करते थे और आगे टेबल में यहाँ उसके डेबिट और क्रेडिट नोट्स और अमेंडमेंट्स फीड करते थे. And these also amendments up to 31st March 19. Done after that will be taken to part 5. Right? Now, moving ahead. Sir, zero rated supplies. अगर आपने with payment of tax की है, यहाँ आएंगी without payment of tax की है, जिसपे कोई भी tax impact नहीं है, that will go to your table number 5. SCZ supplies with payment of tax. Deemed exports. Sir, please don't confuse deemed exports with the normal exports. Deemed exports are specifically defined under notification 48/17, covering only 4 cases. That's all. And all that only related to goods only and not the services. Advances, as already told, only the unadjusted advances as being shown in your balance sheet, that too related only to services for 18-19 will be shown here. Inward supplies on which tax is to be paid on RCM basis. Yes, sir. It is not your outward supply, but an inward supply. But as we are required to pay tax on it, it will form part of 4G. It will form part of 4G. Moving ahead. Credit note, debit note, supplies amendments we have already discussed with. Now, this part gives you your entire output liability. May it be on RCM basis, maybe on forward charge basis, maybe on the advances. This turnover will not match with your books of accounts, right? Because it has advances also, it has inward supplies also. So if we make the appropriate adjustment, only then we can match it with your books of account. Sir, auto populated data जो यहाँ आता है, वो GSTR 1 से पिक होता है. वो इसलिए पिक होता है, आपने इंफॉर्मेशन ही B2B और B2C में डिवाइड करके दी है. But for me, the data is to be picked from your GSTR 3B, because it is a tax oriented table as per the instruction. Let me come to a few practical issues on it. Let's have a look on it. Sir, अभी हम सिर्फ outward से deal कर रहे हैं. When we are dealing only with the output, I will be referring only to table 4, 9, 10 and 11. So, not with the other tables. एक invoice है 7/7/18 का था. GSTR 1 में मैंने रिपोर्ट कर दिया अगस्त में. 3B में अमेंड किया मई में. अमेंडमेंट कब की है? आफ्टर मार्च 19. शो कर दिया था. GSTR 1 में भी मई में ही अमेंडमेंट की. सर, जो ओरिजिनल पार्ट ऑफ इनवॉइस था, दैट विल कम टू टेबल 4. क्यों? वो मार्च से पहले ही दिखा दिया था. और जो अमेंडमेंट की आफ्टर मार्च, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर टेबल 10. सो इनवॉइस विल फॉर्म पार्ट ऑफ टेबल 4 and the amendment will form part of table 10, because done after March 19. Sir, it is not only applicable to invoice, it is equally applicable to the credit notes also. Here, the credit note is shown after March 19. So that is why this credit note will form part of table 11, part 5. Right? Moving ahead are the invoices जो हमने सितंबर 18 में शो किए, 3B में भी 18 में शो किए, but only GSTR 1 में during the year ही amend कर दिए. Sir, everything is being done during the year before 31st March 2019. As a result, this entire will go to table 4. Next invoice is that invoice which has never been shown anywhere. So, जो कहीं नहीं show हुआ, that will come to part 4 and the tax will be payable through WIRC 03. Right? Next example I come to. Let's take it with the help of the practical figures. Sir, your books showing 15,000, 3B showing 15,000, GST 1 showing, what a relaxing situation, right? Everything matching.
but seldom comes. In very few cases, we find such thing. So when it is matching in all the three, this 15, no amendment done in 1920. No amendment done in 1920. As a result, the entire flow will go to table 4 because everything done before March 19. Next, books 15,000, 3 भी 10,000, GSTR 1 also 10,000. लेकिन याद आ गया था हमें 1920 में, हमने गलती कर दी. हमने 1920 में GSTR 3B और 1 में करेक्शन कर दी. सर 3B में करेक्शन कर चुके हैं आप. मार्च के बाद 5,000 will go to part 5 and 10,000 will be table 4. Next, 15,000, 10,000, 5,000 आज तक शो ही नहीं किया. जो नहीं शो किया और जो कर दिया मार्च तक, दोनों. इसका मतलब entire figure of 15,000 will come to your table number 4. Shortfall to be paid through DRC 03. Now, moving ahead. So this will give you a hint, a point that 3B prevails over GSTR 1. Yes. टैक्स किसमें पे होता है? 3B में. आपने पहला केस देखते हैं. 15,000 की मेरी लायबिलिटी थी, मैंने 10 डिस्क्लोज कर दी. अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 2500 बाद में मुझे 1920 में पता लग गया, मैंने सितंबर से पहले पहले करेक्ट कर दिया. नाउ 2500 आज तक कभी करेक्ट ही नहीं किया, तो सर जो कर दिया 10,000 प्लस जो आज तक कहीं नहीं किया 2500, that will go to table number 4. और जो आपने करेक्ट किया ही नहीं प्लस जो कर दिया टेबल 4, और जो मार्च 19 के बाद किया, that will go to table 10 part 5. So 12,500 in table 4 and 2,500 in table 10. Moving ahead. अब next क्या किया? 3, sir please be careful for example number 5 and 6. सर 3B में करेक्शन अगले साल सेम ईयर फुल वैल्यू दिखाई थी. GSTR 1 में करेक्शन अगले साल की है. नो, I will not be considering GSTR 1. I will be focused on 3B. 3B में तो मुझे सेम ईयर में मैंने दिखा दिया था, क्योंकि मैंने 3B में सेम ईयर में दिखा दिया था. The entire value of 15,000 will go to your table number 4. So it shows the value flowing from 3B. Right? Moving ahead. Sir, अगले में क्या था? GSTR 1 मैंने करेक्ट कर दी थी. But 3B अगले साल की. Again, 3B will prevail over GSTR 1. ये 5,000 की करेक्शन मैंने नेक्स्ट ईयर की है. जब मैंने इस 5,000 की करेक्शन नेक्स्ट ईयर की है, तो ये 5,000 मेरे टेबल 10 का पार्ट बनेगा, यानी पार्ट 5 का पार्ट बनेगा. So I hope I am clear about the concept that the GSTR 3B data prevails over GSTR 1. So if there are auto-populated figures, we can change those figures. So this was about table 4. सर टेबल 5 में आपकी सारी वो आउटवर्ड सप्लाईज आती हैं जो एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, जिस पे टैक्स नहीं है. लाइक एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. सर निल रेटेड नॉन GST सप्लाई, हर एक टर्म का एक अपना रेलेवेंस है. लाइक नॉन GST सप्लाई कवर्स योर पेट्रोल, एल्कोहल, लिकर, शेड्यूल 3 सप्लाईज exempted, which are by WIRC specifically exempted, but an option has been given to feed in either of these columns because initially it was not possible to bifurcate, or sometimes in the 3B we have changed the figures. So an option has been given that out of exempted and rated non-GST, it can be put anywhere. Credit note again related to the non, जो ये आपने सप्लाई शो की हैं, जीरो रेटेड, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इनके जो डेबिट और क्रेडिट नोट्स और जो एडजस्टमेंट्स है which have been done up to March 19 will be shown here. So moving ahead, ये था हमारा table 4 and 5 which dealt with output. Now let me come to table number 6 which deals with input. सर टेबल नंबर 6 इज नथिंग. ये मार्च 19 तक की, यानी अप्रैल 18 से मार्च 19 तक की डाटा में 3B में फाइल किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी है.
इट इज जस्ट बेस्ड अपॉन 3B फिगर्स। आपके 3B में जो फिगर्स आती हैं ये उसको पिक कर लेता है। और सर ये इतना समझदार नहीं है कि इसको पता लग जाएगा कि 17-18 की कौन सी एडजस्टमेंट की है। और लेट मी टेल यू, इतने समझदार तो हम भी नहीं है। अगर हमने नोटिंग ना की हो and in a file where it has been skipped by your staff, आपको खुद ही समझ नहीं आता कि कौन सी एडजस्टमेंट कब कर दी थी, right? So I always say my staff to please make a note, because I don't have that much memory. If they can have and they can remember, that's a separate thing, but always make a habit of noting, and so do is the system. सर इवन दिस सिस्टम डज नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सी आपने pertaining to adjustments जो है की है। सर many a times the chat box is showing about the presentation copy, the everything will be shared, sir. Amish ji is very on to this point that everything should be shared for the benefit of members, and it will be shared right now. Moving ahead, sir 3B में यहाँ पे डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है। When it gets auto populated here, ये इसमें 17-18 की फिगर्स का इफेक्ट भी ले जाएगा। यानी आपने 17-18 का कोई क्रेडिट आज अवेल किया, ये वो भी शो करेगा। अभी हम देखेंगे स्पिल ओवर इफेक्ट्स में कि हम इसको कैसे बाइफिकेट करेंगे। सर 17-18 की फिगर यहाँ आती है 6A में ऑटो पॉपुलेटेड नॉन एडिटेबल। आप 6B में उसकी बाइफिकेशन देते हो इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। सर एज पर द इंस्ट्रक्शन इसमें आपने ऑल अदर आईटीसी में जो फिगर फीड की होती है, ऑल अदर आईटीसी में 3B के जो फिगर फीड की होती है उसके अकॉर्डिंग बाइफिकेशन आनी चाहिए, एंड नॉट एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन सेज ideally the difference column 6J should be 0. So table 6 drags the data from your 3B. Option has been given to you not to bifurcate into input capital goods and input service. Sir, जब ये bifurcation देनी थी ना, trust me, it was a very lengthy task because ये data books से grasp करना पड़ता था, and it was not easy. It was not easy. हम किसी particular चीज को capital goods और input service में classify कर रहे हैं. Sometimes तो the nature is very easy to understand, but sometimes it gets mixed up. For example, I talk about the borrowing cost of an asset. When capitalized, will it be a capital goods or input service, and many more examples like that. But as of now, this provision has been relaxed, so I will not be taking you through it. So you can feed it any of the bific column, maybe input capital goods or input services. Now, सर इसने आपसे सारे इनपुट सप्लाई ऑल अदर में, रिवर्स चार्ज में, रजिस्टर्ड पर्सन से, एंड सो नाउ हियर आल्सो द ऑप्शन हैज बीन गिवन टू वेदर टू गिव द ब्रेकअप और नॉट टू गिव इट। इवन सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपका जो भी इंपोर्ट है उसका डाटा आपसे इनपुट का मांगा गया है। सर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हिच आई वुड लाइक टू मेक हियर। फॉर्म में एक एरर रह गया था, वो क्या एरर था? एरर था टेबल 8 में, बट उस टेबल 8 की एरर को मैं यहाँ 6E पॉइंट से लिंक करूंगी, बट आफ्टर अ व्हाइल इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आई विल कम टू इट लेटर ऑन। नाउ इसमें भी आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी के थ्रू लिया, रीक्लेम। सर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रीक्लेम? 180 डेज का क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ, आपने क्रेडिट रिवर्स कर दिया, देन यू अगेन रीक्लेम्ड इट, सो दैट इज द रीक्लेम्ड आईटीसी, and the difference ideally should be 0. सर यहाँ तक तो वो कॉलम्स थे जो मेरे 3B से फ्लो करते थे, बट अदर देन 3B भी मेरे क्रेडिट लेजर में इनपुट आते हैं, and that comes from tran 1, tran 2, various ITC forms. All those are to be added to arrive at the total ITC availed figure. सर कईयों के केस में ट्रान 1 18-19 में बिलेटेड फाइल हुआ था, सो इन दैट केस अगर आपका ट्रान 1 बिलेटेड फाइल हुआ है तो आपको यहाँ डाटा शो करना है, बट कईयों के केस में एरर आ रहा है, उन्होंने 17-18 में ही फाइल किया था, बट स्टिल सिस्टम इज शोइंग हियर द ट्रान 1 फिगर, सो प्लीज रिमूव दोस फिगर्स बिफोर अपलोडिंग योर GST online. That is an error, that's a bug that can be corrected. Now moving towards table number 7. सर टेबल नंबर 7 में आईटीसी के रिवर्सल्स हैं 180 डेज की वजह से। सर रूल के स्पेसिफिक मैंने क्या प्रोविजंस है आई हैव पुट हियर फॉर योर इजी रेफरेंस। रूल 37 यानी 180 डेज का प्रोविजन,
ISD में नेगेटिव अपॉर्शनमेंट या रूल 42 43 से रिलेटेड जो भी आपके रिवर्सल्स है 17.5 के अकॉर्डिंग आपने कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट के रिवर्सल्स किए हैं, आपने ट्रेंड 1 और ट्रेंड 2 के क्रेडिट का रिवर्सल किया है, all these figures are to be shown here. Again option has been given कि ये सारी figures को other than tran 1 tran 2 credit आप इकट्ठा any other में डाल सकते हैं, but I don't suggest it. The information is available and should be duly filled in, right? सर इस चीज में ध्यान रखिएगा, जब हम अपनी 3B फाइल करते हैं तो इसमें एक नीचे कॉलम आता है टेबल 4D, उसमें 17.5 का आपकी फिगर जाती है, लेकिन वो 17.5 की जो फिगर है वो सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, वो आपके क्रेडिट को रिड्यूस नहीं करती। तो जो 4D 3B की कॉलम है, आई रिसीव्ड अ क्वेरी आल्सो कि मैं वो 4D की फिगर जो है मेरा क्रेडिट कम नहीं करती है, तो वो यहां मत डालिएगा जो 4D से, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, इट हैज नो इफेक्ट इन 3B or your credit ledger. So as a result that figure is just an intimation कि मेरा सारा 5 का इतना था, वो reduce नहीं करता, तो that is not to be taken here in table 7, right? Moving ahead, table number 8. Sir table number 8 2A से reconciliation कराता है। सबसे पहले ये 2A से आपका डाटा पिक करता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी दैट फॉर 18-19 दिस फिगर इज नॉट कमिंग अप एप्रोप्रिएट। सर 17-18 में भी अप्रोप्रिएट नहीं थी, अब तो 18-19 में तो बहुत ही बुरा हाल है। इन वन ऑफ माय फ्यू केसेस दिस इज कमिंग एज 0, आ ही नहीं रही है, शो ही नहीं करता। सो अगर तो इस तरह का एरर है कि वो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप पीडीएफ में इसको बना के 9C के साथ अटैच कर सकते हैं, राइट? बट आपको ये भी चेक करना है, जब वो कई बार 2A से फिगर 8A के लिए पिक करता है तो वो कुछ क्रेडिट्स छोड़ देता है जो इनएलिजिबल है, या जैसे मैं कहूँ जो दूसरे स्टेट के क्रेडिट्स है। आपने होटल लिया, यू आर इन मुंबई, यू वेंट टू सम अदर स्टेट, मे बी अहमदाबाद, यू वेंट टू गुजरात, सो देन इन दैट केस आपने वहां पे होटल बुक कराया, आपको वहां का CGST SGST लगा विच वाज नॉट एलिजिबल, तो जब वो 8A में फिगर पिक करता है फ्रॉम 2A, वो क्रेडिट्स छोड़ देता है। So all these adjustments of 2A must, कई बार सामने वाले ने रिटर्न नहीं फाइल की होती, submit status shows no submission, so even that figures are not picked in table 8. So apart from that adjustment, still if you are not getting the appropriate figure, you can make it in PDF format and can upload it without CA attestation. Sir 2A से मैचिंग कराएगा 3B की। अभी तो हमने 3B की फिगर्स फीड की थी, कहाँ फीड की थी? 6B और 6H में, अभी टेबल 6 में ऑटो पिक कर जाएगा। इधर आपको कहेगा आपने 3B में इतना लिया, आपने 3B में इतना लिया, 2A में इतना आ रहा है, आपका जो डिफरेंस है मुझे बताइए क्यों है, क्या ये क्रेडिट अवेलेबल था, आपने नहीं लिया तो अब लैप्स हो जाएगा, और अवेलेबल था बट इनएलिजिबल था, कार का था, इंश्योरेंस का था, मैंने अवेलेबल था बट इनएलिजिबल था, मैंने नहीं लिया। सर E और F में आने वाली दोनों फिगर्स लैप्स हो जाती हैं नीचे आके, ये देखिए E एंड F, राइट? सर इतना पोर्शन आपका 2A से डील करता है, 2A से 3B की मैचिंग कराता है, इससे नीचे वाला पोर्शन इंपोर्ट्स पे आ जाता है। यहाँ तक इंपोर्ट्स, क्यों इंपोर्ट्स? सर इंपोर्ट की फिगर 2A में नहीं आती, मैच कराने का कोई पर्पस ही नहीं था, सो दैट इज व्हाई इंपोर्ट्स हैव बीन केप्ट सेपरेटली। नाउ अब सर आप कहते हो मैंने तो मार्च 19 के बाद भी क्रेडिट लिया था भाई 3B में, तो कोई बात नहीं, कहता आप जो टेबल पीछे अपना 12 और 13 में शो करोगे आफ्टर अप्रैल 19 में वो भी ऐड कर देता हूं। क्यों? 2A के उस साल में आएगा, आपने बाद में लिया, आपने जो मार्च 19 तक लिया वो मैं टेबल 6B से पिक कर लूंगा, जो मार्च 19 के बाद लिया वो मैं पीछे पार्ट 5 से पिक कर लूंगा। अब तो मैच करना चाहिए, अभी भी अगर डिफरेंस आएगा तो कितना लैप्स करवाना है, right? Sir, GST-9 is not a tool to take the credits. It's not a platform to reduce the liability. You can only increase the liability. You can only increase the liability and reverse the credits, but you cannot avail the credits.
नाउ आई कम टू इंपोर्ट्स। सर इंपोर्ट से मैचिंग करा रहा है, आपने 6E में इंपोर्ट की फिगर बोली थी। सर 6E में मैंने आपको बोला था कि मैं लिंकेज कराऊंगी, देयर इज अ फ्लॉ इन द फॉर्म। व्हाट इज द फ्लॉ? सर यहाँ पे 6B में जब फिगर पिक करता है तो साथ में पार्ट 5 की फिगर ऐड कराता है कि आपने मार्च 19 के बाद क्रेडिट लिया हो। लेकिन जब फॉर्म ड्राफ्टिंग हुई तो यहाँ 6E से तो फिगर पिक कर ली, सर 6 टेबल मार्च 19 तक का होगा। लेकिन अगर आपसे कोई इंपोर्ट का क्रेडिट छूट गया था और आपने उसको मार्च के बाद लिया होगा तो आप उसको पार्ट 5 में दिखाएंगे, और यहाँ पे पार्ट 5 ऐड करने का कॉलम ही नहीं है। सर यहाँ पे 6 के साथ पार्ट 5 ऐड कराता था, लेकिन यहाँ नहीं कराता था। सो एज अ रिजल्ट 3 जुलाई 2019 को गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज दी और कहा क्योंकि ये गलती है और ये आपकी फिगर लैप्स नहीं होगी क्योंकि आप क्रेडिट ले चुके हो आफ्टर मार्च 19, तो एक काम करना, जब 6E फाइल करोगे तो 6E की फिगर पूरी ले जाना, इवन अगर आपने अमेंडमेंट मार्च 19 के बाद की है, यानी सितंबर मार्च 18 से सितंबर 19 तक पूरा डाटा इस टेबल में शो कर देना, सो दैट जब वो यहाँ फिगर पिक करे, यहाँ पे आपके टेबल 6E से वैल्यू पिक करे तो वो सारा आ जाए और आपका लैप्स ना निकले। So this was the point, this was the error that has been taken. It will arise only the situation जब आपने imports का कोई क्रेडिट मार्च 19 के बाद लिया होगा, right? Now this was your table 8. तो एक बारी सर टेबल 9 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, जब मैं स्पिल ओवर इफेक्ट्स कराऊंगी, दिस 9 इज गोइंग टू बी माय बेसिक टेबल। इसमें दो इश्यूज है सर। द ग्रे कॉलम इन फ्रंट ऑफ यू डिपिक्ट्स टैक्स पेबल एडिटेबल, इसमें वही फिगर आनी चाहिए जो 18-19 की हो, टैक्स पेबल जो 18-19 का होगा। But this portion, orange color in front of you is non-editable, और ये 3B से पिक होता है। कौन सी? मार्च 19 तक की 3B से। और फिर से सर हमारे सिस्टम को नहीं पता कि इस 3B में 17-18 से पर्टेनिंग कितना डाटा है। सो जब ये 3B की फिगर पिक करेगा, ये इसमें 17-18 के इफेक्ट्स भी ले जाएगा। तो सर एक बात देखिए, ये 18-19 से हमने करना है और ये 17-18 के इफेक्ट्स के साथ करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पिछले साल के स्पिल ओवर इफेक्ट्स को शो करेगा, विच वी विल बी डूइंग इन सम टाइम। अभी हमने जैसे आउटपुट के एग्जांपल्स किए थे, लेट मी टेक यू टू इनपुट एग्जांपल्स आल्सो। हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। इन केस ऑफ इनपुट, सर जब हम इनवर्ट सप्लाईज की बात कर रहे हैं, सो टेबल 6, 8, 12 एंड 13 विल कम इनटू पिक्चर, राइट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी था 1 लाख, 3B में भी 1 लाख, 2A में 1,05,000। सर 2A में एक्स्ट्रा आने वाला आईटीसी मेरा नहीं है। You know, if I check my own ITC, मेरे अपने ITC में it is showing too much excess ITC. मैंने कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया, वो मेरे 2A में आ रहा है। So that ITC should lapse. That ITC should lapse. So क्या होगा? 6A में 1 लाख ही आएगा क्योंकि आपने 3B में 1 लाख लिया है, 6B में भी 1 लाख ही आएगा, आपने बाइफिकेशन 1 लाख की ही देनी है। लेकिन 8A में वो 1,05,000 पिक करेगा, 6B से फिगर 8B में जाती है, वो 1 लाख ही जाएगी, 5,000 आपका लैप्स कर जाएगा। सर टेबल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 6B की फिगर 8B में पिक होती है और 8C में फिगर टेबल 12 और 13 से आती है, राइट? सो नेक्स्ट केस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,05,000 का मेरा एलिजिबल आईटीसी था, 1 लाख मैंने मार्च तक ही ले लिया था, 5,000 बाद में याद आया, मई 19 में लिया, ले तो लिया। 2A में भी 1,05,000 आ रहा है, कुछ भी लैप्स नहीं होना चाहिए। 6A 3B बेस्ड है, फिगर कितनी आएगी? 1 लाख। 6B आपने बाइफिकेशन देनी है, 3B बेस्ड, कितनी आएगी? 1 लाख। टेबल 13 में क्योंकि आपने एडजस्टमेंट मार्च 19 के बाद की है, आईटीसी इंक्रीज किया है, 5,000 विल रिफ्लेक्ट इन योर टेबल नंबर 13। सर अब आए टेबल 8 पे, 6B से फिगर 8B में 1 लाख,
टेबल 13 से फिगर 8C में 5000, अल्टीमेटली नथिंग विल लैप्स, 8D विल बी 0। 1,05,000 था, 1,05,000 ही 2A में आ रहा था, 1,05,000 हमने दो हिस्सों में तोड़ के ले लिया, इट्स ओके, नथिंग शुड लैप। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, सेम एग्जांपल, बस इसमें हमने क्या किया था, क्रेडिट इंक्रीज किया था, इसमें हमने क्रेडिट डिक्रीज किया है, तो टेबल 12 यूज हो रहा है। 1,05,000 बुक्स के अकॉर्डिंग था, 1,08,000 ले लिया, 3,000 बाद में किया, 3,000 विल गो टू टेबल 12, टेबल 12 से वैल्यू 8C में जाएगी। सर टेबल 8 पिक्स द नेगेटिव वैल्यूज, so I have already checked it myself and done also, so 8C pick your negative values, table 12 will show minus 3,000, 1,08,000 minus 3,000, 1,05,000, nothing will lapse, the difference is 0. So this was the table of input supplies. Now coming back, अभी हमने टेबल 9 डिस्कस किया था, टेबल 9 के दो पार्ट से, पेबल एंड पेड, राइट। सो टेबल 9 के दो पार्ट से, पेबल एंड पेड, एंड देन now we will see how we will be using this table to check the spillover effects. But उससे पहले पार्ट 5 को एक बार देखते हैं, which is very important. सर पार्ट 5 में जो एडजस्टमेंट्स आपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 तक की होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट जब वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, सर टेबल 10 और 11 आउटपुट से डील करता है, लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी माइनस। टेबल 12 और 13 आईटीसी से डील करता है, आईटीसी माइनस आईटीसी प्लस, और इसका जो टैक्स इंपैक्ट होता है वो टेबल 14 में आता है। सर मैंने पहले ही कहा था टेबल 9 तक सिर्फ मार्च 19 के आते हैं, और ये अकेला पार्ट 5 जो है that deals with the effects of April to September 19 including the tax paid thereon, right? So this was the brief idea of what, so part 6 has become optional. I'm not going to take it. We can skip this information, right? Now we are on to the spillover effects. So before coming to spillover effects, I think we are clear about the form GSTR 9 now. So can I see in the chat box, can we move further? So because of the bulkiness, Qureshi, I request you to please post a query a bit later so that I can take it at the end of the session. So another 30 minutes are going to be very, very crucial. Another 20 minutes, I should say. And if you be with me in that, then in that case, you will not face any sort of problem in spillover effects. Sir, I'm here for your queries, so don't bother about the queries. Just concentrate on spillover effects. Hope many of the queries will get sorted out, right? So now I want all of you to be with me, please. Now, first of all, I am taking the output impacts. Amish ji, so these are all the examples which we will be doing today. As I told you about the spillover effects, we'll also be covering the query raised a few days back, right? Now, Right. Because we are into output effects, we are dealing with table 4, 9, 10 and 11. सर ये अब टेबल्स आपको याद हो गया, हमने इतनी अभी भी गो थ्रू किए और 17, 18 में ऑलरेडी कर चुके। टेबल 4 में मैंने आपको एक बेसिक क्राइटेरिया दिया था, टेबल 4 में फिगर्स आनी चाहिए सिर्फ 18, 19 से रिलेटेड। क्यों? आप रिटर्न किसकी बना रहे हैं? 18, 19। फिगर्स किसकी आनी चाहिए? 18, 19 से रिलेटेड आनी चाहिए। सो 18, 19 से रिलेटेड जब आएगी, सर ये 3B से डाटा आप जब पिक करोगे, क्यों? हम बेस डॉक्यूमेंट कौन सा लेते हैं? 3B लेते हैं। मैंने आपको कहा था टैक्स ड्रिवन है। हमने टेबल 4 में क्या किया था? 3B में जिसपे टैक्स पे कर दिया वो ले लो, प्लस जिसपे आज तक नहीं किया वो ले लो, राइट? सर 3B में जिसपे टैक्स पे कर दिया, 18-19 की रिटर्नों में जो आ रहा होगा उसमें पिछले साल 17-18 का टर्नओवर भी होगा। तो क्या करूं? सर रिकंसिलेशन, बीआरएस बनाते थे, पुराने सालों के इफेक्ट्स को निगेट कर दीजिए, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। यही किया मैंने इस पोर्शन में। मैं 3B से डाटा पिक करूंगी,
पिछले साल की जीएसटीआर एनुअल रिटर्न्स फॉर 17-18 पिक करूंगी, जो उसके टेबल 10 में फिगर्स आ रही होंगी वो माइनस कर दूंगी, जो टेबल 11 में आ रही होंगी ऐड कर दूंगी। अब ये जो फिगर निकलेगी वो मेरी 18-19 से पर्टेनिंग निकलेगी। एक मिनट के लिए आप इस प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आएंगे। 3B में आपने 1,02,000 शो किया था, आउटपुट पे आते हैं, 1,03,000 शो किया था। पिछले साल का 5,000 बढ़ाया था 18-19 में, और पिछले साल का 2,000 कम किया था। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट 3,000। ऐसे बोलूं, 1,03,000 फिगर जो मेरी 3B में गई है, उसमें से 3,000 पिछले साल की है और 1 लाख रुपीस इस साल की है। राइट, सो यही मुझे करना है। अब इस साल की 3B में फिगर कितनी है? 1 लाख प्लस जो आज तक कहीं नहीं दिखाई वो इसमें आएगी। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला सेज, दैट इन टेबल 4 पिछले साल का इंपैक्ट उल्टा कर दीजिए, और जो 3B सर करने के लिए वेरी इजी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग यू, जो आपकी 3B में फिगर आ रही है 18-19 की, पिछले साल का 17-18 उठाइए, टेबल 10 माइनस कर दीजिए, टेबल 11 ऐड कर दीजिए, करंट ईयर 18-19 से पर्टेनिंग 3B में कितना गया है आपको मिल जाएगा। उसमें जो फिगर आज तक कहीं नहीं गई वो ऐड कर दीजिए। दिस शुड बी योर टेबल 4, दिस शुड बी योर टेबल 4। और सर टेबल 4 में जितना पेबल आता है टेबल 9 में हमेशा उतना ही पेबल होना चाहिए। दिस इज हाउ आई चेक माई रिटर्न्स। टेबल 4 में जो पेबल आएगा वही टेबल 9 में आपका पेबल होना चाहिए। नाउ वी कम टू पेड पोर्शन ऑफ टेबल 9। सर पेड पोर्शन में जब वो ऑटोमेटिक डाटा पिक करेगा तो वो 3B से पिक करेगा। 3B में कितनी फिगर है? 1,03,000। सो आप कहोगे, लेट्स सपोज मेरा कुछ भी नहीं था दिखाने वाला, आप बोलोगे 1 लाख मेरा 18-19 का था, 3,000 मेरा पेड में है। पेबल और पेड में डिफरेंस 3,000 पिछले साल के टेबल से टैली हो जाएगा। आप पिछले साल के टेबल 10 और 11 का नेट इफेक्ट देखोगे तो वो 3,000 ही निकलेगा, जो मैंने अगली एग्जांपल में आपके लिए फ्रेम आउट किया हुआ है। So these formulas are just a check formula, and how I check my returns I share with you. जब मेरे पास staff और the CAs who are working with me, they come to me, how I do it, मैं उनसे पूछती हूँ 3B 18-19 में जो फिगर्स आ रही हैं उसमें से पिछले साल के टेबल माइनस कर दीजिए, जो अभी अभी ऊपर मैंने आपको कराया टेबल 4 में। बट अभी भी ये मेरे बुक से मैच नहीं करेगा या मेरी आउटपुट लायबिलिटी नहीं होगी। सर हो सकता है 18-19 की कुछ करेक्शन मैंने 19-20 में की है, यानी करंट ईयर का टेबल 10 एंड 11। सर एक बात याद रखिएगा, जो करंट ईयर का टेबल 10 और 11 है उसमें फिगर सिर्फ और सिर्फ 18-19 की ही आनी है। सर 1-2 पर्सन ने ये गलती भी किया और मुझसे क्वेरी भी आई थी कि 18-19 के लिए क्या हम 17-18, नो, 18-19 की जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो उसके टेबल 10 और 11 में फिगर सिर्फ वो होंगी जो 18-19 की एडजस्टमेंट आपने 19-20 में की है, यानी 18-19 pertaining to 18-19 एडजस्टमेंट डन इन 19-20, उसमें कोई 17-18 का इफेक्ट नहीं होगा। अब मुझे बताइए क्या ये फिगर मेरी मैच करेगी? जो मैंने 3B में दिखा दिया 18-19 का, मैंने वो यहां से निकाल लिया, यहां से सिर्फ 1 लाख जो 18-19 के पर्टेनिंग था, उसमें जो मैंने 18-19 की एडजस्टमेंट अगले साल की टेबल 10 ऐड कर दिया, टेबल 11 माइनस कर दिया। अभी भी अगर आपके पेड और पेबल में फर्क होगा, जब मैं कैलकुलेटर पे पेबल की फिगर लूंगी और पेड माइनस करूंगी, अगर कोई फर्क निकलेगा, अगर पेबल ज्यादा होगा तो DRC 03 जाना है, और अगर पेड ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका रिफंड बनता है, आपने टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है। एंड सर टेबल 9 इज अ बेस फॉर टेकिंग द रिफंड, अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54।
subject to the provisions of section 54. मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी. अभी जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, सर ये सारे फॉर्मूलाज मैंने एक्सेल शीट में लगाए हुए हैं, विच आई जस्ट शेयर विद यू. जस्ट गिव मी अ व्हाइल, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस वन and we'll discuss 1 minute on the impacts with you. Sir, here it is the Excel sheet. You can see, is it visible, sir? Yes, it's visible. Okay. Sir, this Excel sheet is divided into two parts, which is on your screen. Here I have covered the sales portion. Sorry. Here I have covered the sales portion and here I have covered the purchase portion. पहले मैं सेल्स पे थोड़ा सा फोकस करवाती हूँ. सर सेल्स में 3 चीजें होती हैं, 3B, GSTR1 and your books of account. And trust me, this is the sheet which I give to the accountant or to my office staff कि ये मुझे फिल करके दे दीजिए, so that at least I get to know कि कितनी मेजर गलतियां हैं. Sir, it gives you a brief idea to handle the audit. 3B की फिगर कुछ नहीं करना, 3B खोलनी है, यहाँ पे सेल की फिगर डाल देनी है जो हमारे केस में थी 1,03,000, which anybody in your office can do it. Next, उसको 2 हिस्सों में बाइफिकेट करके डालना है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, राइट. एंड सेकेंडली आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो एडजस्टमेंट्स है, टेबल 10 और टेबल 11 पिछली रिटर्न से पिक करके यहाँ पे ऐड और लेस कर देना है. सर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं ऑलरेडी, यू कैन चेक इट आउट. सो जब आप यहाँ फीड करोगे, अब जो यहाँ फिगर निकलेगी टोटल में, उसमें 17-18 के इफेक्ट्स 3B में से अलग कर दिए जाएंगे. क्योंकि खुद सोचिए सर, आपको जब इस साल की रिटर्न में देखना है मेरा क्या पेबल है, तो मुझे इसी साल का डाटा देखना है. पिछले साल के डाटा के इफेक्ट मैंने यहाँ निगेट कर दिए. नाउ अगर मैं एज पर बुक्स का डाटा डालूंगी 18-19 के परटेनिंग, और जब ये मैच करके नीचे डिफरेंस निकालेगा, सर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 3B विद बुक्स. ऑल्दो मैं GSTR1 से भी कंपेयर करते हैं, हम 3B एंड GSTR1 भी कंपेयर करते हैं एंड डिफरेंस वर्कआउट करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इज व्हाट इज मार्क्ड इन येलो कलर, बुक्स विद 3B. ऑटोमेटिकली वो आपका डिफरेंस निकाल देगा. 18-19 की फिगर जो आपने 3B में दिखाई है और 18-19 की वो फिगर जो आपने बुक्स में दिखाई है, ये उसका डिफरेंस वर्कआउट कर देगा in taxable as well as exempt. Now, अब ये जो डिफरेंस निकल आया in front of you, इसमें से कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होगी जो आपने 19-20 में कर दी होगी, क्योंकि सर आपने ऊपर जो 3B की फिगर उठाई है वो तो मार्च 19 तक की रिटर्न ली होंगी. अगर आपने पोस्ट मार्च 19 एडजस्टमेंट की है तो वो आप यहाँ पे शो करोगे जो इस साल के टेबल 10 और 11 में आनी है. अब बोलोगे इतना डिफरेंस आया, अरे इतना तो मैं पोस्ट मार्च 19 करेक्ट कर चुका हूं. द बैलेंस स्टिल लेफ्ट इज येट टू बी करेक्टेड, और जिसके लिए आपको DRC 03 भरना है, जिसके लिए आपको DRC 03 भरना है. सो ओनली विद दिस चार्ट यू कैन गेट टू नो कि आपके पिछले साल 17-18 का क्या इफेक्ट था, आपको 18-19 के टेबल 10 और 11 में क्या दिखाना है, आपको कितने का DRC 03 पे करना है. सो दिस वाज फॉर सेल. और सर इसके नीचे ही मैंने RCM की डिटेल अलग से बनाई है, और जब मैं पेबल और पेड का डिफरेंस लेती हूँ तो ये आपकी RCM की फिगर नीचे से ऐड कर लेता है. सो इन दिस वे RCM में क्या फर्क रह गया, RCM का आउटपुट एज पर बुक्स एंड एज पर 3B, एडिंग इनटू इट द फॉरवर्ड सप्लाईज, ऐड करके आपका डिफरेंस वर्कआउट कर देता है. नाउ लाइक we did it for GST output services, the same is for the input side, purchase side also. So purchase में जो matching हम करते हैं, that is 3B and books and 2A. So 2A को मैं यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी because I consider 2A bill wise
right? So here what I do, the most important difference again here is 3B and books, which is marked in front of you in yellow color. इसमें भी जब हम लेंगे वो हमें डिफरेंस देगा कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपने पोस्ट मार्च 19 की है और एज अ रिजल्ट, और कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है विच आर स्टिल टू बी मेड. So with this Excel chart with the formulas embedded into it already, जो एग्जांपल हम अभी करने जा रहे हैं, जब आप इसमें फीड, सर इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के इफेक्ट्स दिए हुए हैं even in the inputs. So you just have to see the figure, put in the Excel sheet, automatically 17-18 effects will be removed and you can get the 18-19 data extracted from 3B to be compared with 18-19 data as per books. इसमें भी आरसीएम ऐड करके, आरसीएम का इनपुट का कंसिडर करके ही ये आपका चार्ट जो है वो रेडी है. इसके अलावा मैंने आपको बोला था क्लोजिंग बैलेंस जरूर मैच करिएगा. आई मैच इट फॉर 31/3/18 ऑल्सो, 31/3/19 ऑल्सो, एज पर बुक्स एंड एज पर पोर्टल. और ये डिफरेंस आपका मैच करेगा जो आपने एडजस्टमेंट्स लेटर ऑन की होंगी. सर जब आप ये चेक्स लगाएंगे ना आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये एडजस्टमेंट्स आपका क्रॉस चेक कर देगा. Right? So this is the Excel sheet which you can refer to. Yes, it will be shared with you also. So now with this one more Excel sheet I would like to share with you, which is pertaining to 9C. Chalo 9C pe we will come a bit later. I just come back to the PPT now and share the PPT back. Right? Yeah. Yes. So are we back with the examples? So please be with me in these examples for another 10 minutes and the entire concept will be at your tips. 3B की फिगर फ्रीज आएगी. 1,03,000 रुपए. 1,03,000 रुपए आपने 3B में डाले थे, जिसमें से नेट इफेक्ट 3,000 पिछले साल का था, जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं. राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी, अब पहला केस लेते हैं, सब कुछ 18-19 का करेक्ट था. सर अगर 18-19 का सब कुछ करेक्ट था, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 लाख है, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी 1 लाख है. टेबल 4 में कितना जाना चाहिए? सिर्फ 18-19 का. सो टेबल 4 में आप कितना दिखाओगे? 1 लाख. टेबल 4 और टेबल 9 हमेशा सेम आते हैं. टेबल 9 में भी कितना आएगा? 1 लाख. टेबल 9 का पेड कॉलम ऑटो पिक करता है वो 3B से. सर उसको कोई चेंज नहीं करेगा, किसी भी केस में कर ही नहीं सकता. तो आप देखिए वो सब में 1,03,000 आएगा. आपने 18-19 की कोई भी एडजस्टमेंट 19-20 में की ही नहीं है. सो एंटायर पार्ट 5 विल बी 0. नाउ अगर मैं चेक करना चाहूं, मेरे टेबल 9 में पेबल कितना है? 1 लाख. मेरे टेबल 9 का पेड कितना है? 3,000. डिफरेंसेस ऑफ 3,000 जो पिछले साल का इंपैक्ट है. सो अल्टीमेटली अगर मैं पिछले साल के इंपैक्ट माइनस कर दूं, रिवर्स कर दूं, 5,000 माइनस 2,000 प्लस, तो आप देखिए मेरा आउटपुट से बुक्स के मैच कर गया. इट मींस माय रिटर्न इज करेक्टली गेटिंग फाइल्ड. राइट? सेकेंड केस लेते हैं. मैंने 18-19 में एक सेल छोड़ दी थी. कितने की? 8,000 रुपीज की. लेकिन दो केस हो सकते हैं. 8,000 की सेल छोड़ी, मार्च 19 के बाद करेक्ट कर दी, करेक्टेड, या मार्च 19 के बाद करेक्ट ही नहीं की, आज तक भी नहीं की. तो भाई साहब जब आज तक भी नहीं की तो इस केस में तो DRC 03 बनना चाहिए. बिल्कुल बनेगा अभी. और अगर कर दी हुई है तो टेबल 10 में डिस्क्लोजर दे देंगे. सो लेट्स सी. 1,08,000 मेरी लायबिलिटी थी. 1 लाख तो मैंने मार्च तक की रिटर्नों में पर्टेनिंग टू 17-18 दिखा दी, 18-19 दिखा दी हुई थी. कैसे करूंगी? 1,03 माइनस 5 प्लस 2. सर यही फॉर्मूलाज अभी किए थे हमने. पिछले साल के इफेक्ट निगेट कर दीजिएगा. इस केस में आपका कोई भी DRC 03 नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं होना. 1 लाख आपने मार्च तक दिखा दिया था. पेबल में वही फिगर आती है जो 4 का पेबल होता है. अगले साल करेक्शन की है 19-20 में, 19-20 में. सो एज अ रिजल्ट 8,000 की फिगर विल शो इन टेबल 10.
अल्टीमेटली पेबल और पेड का डिफरेंस देख लेते हैं। सर वही फॉर्मूला, चेकसम फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ बताया था, आई विल बी अप्लाइंग दैट चेकसम फॉर्मूला ओनली। 3B 18-19 1,03,000, पिछले साल के इफेक्ट माइनस कर दीजिए, -5 + 3 मतलब +2, ये फिगर आ गई 1 लाख। 1 लाख में करंट ईयर के टेबल 10 में कितना है 8,000, 1 लाख प्लस 8,000, 1 लाख 8,000, एग्जैक्टली मैचिंग विद योर बुक्स फिगर, करेक्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, मैंने कहीं नहीं दिखाया, इसका मतलब मेरे पेबल और पेड कॉलम का डिफरेंस 8,000 आना चाहिए, जिसके लिए मैं DRC 03 पे करूंगी। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था 1,08,000, मैंने 1 लाख ही दिखाया था, बट सर टेबल 4 में हम क्या ऐड करते थे, जो दिखा दिया प्लस जो कहीं नहीं दिखाया, और जो कहीं नहीं दिखाया 8,000, इसका मतलब टेबल 4 में आएगा पूरा 1,08,000, पेड में होगा 3,000, 1,03,000। अब देखते हैं कैसे सर DRC 03 पे होगा टेबल 8 में, अगले साल कोई करेक्शन नहीं की, टेबल 10, 11 विल बी 0। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे चेक करेंगे। इस साल की 3B में इस साल के पर्टेनिंग कितना है 1 लाख, पीछे टेबल्स में कुछ है ही नहीं, प्लस 8,000, इसमें 8,000 आपका कम आएगा, जिसके लिए आपको 8,000 रुपीज का DRC 03 पे करना होगा, यानी योर पेबल एंड पेड डिफरेंस विल कम टू बी रुपीज 8,000 प्लस इम्पैक्ट ऑफ 3,000 जो पिछले साल का। कमिंग नेक्स्ट, सर यहाँ तो DRC 03 था, हो सकता है आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, एक्सेस पे किया, अगले साल करेक्ट भी कर दिया, या अगले साल करेक्ट नहीं किया। सर अगर अगले साल करेक्ट कर दिया तो इसका मतलब टेबल 11 में वैल्यू डाली होगी। आपकी बुक्स की एक्चुअल फिगर कितनी है 92,000, आपने GST या 3B में कितनी दिखा दी हुई है 1 लाख। करेक्शन की मार्च 19 के बाद, इसका मतलब टेबल 11 में आपने 8,000 माइनस कर दिया होगा। आ तो गए सर बुक्स के लेवल में, 1 लाख दिखाया था, 8,000 माइनस कर दिया, 92 से 92 मैच्ड, 92 से 92 मैच। सर पेड और पेबल में जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ 3,000 का रहेगा, वो उस पिछले साल का पर्टेनिंग का डिफरेंस आपको शो होगा, जो आप पिछले साल की रिटर्न के टेबल 10 और 11 से मैच कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आपने कभी करेक्शन की नहीं, आपको पता ही नहीं लगा आपने एक्सेस पे किया था, 92,000 बुक्स की वैल्यू थी, 92,000 ही आपका पेबल बनना चाहिए क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपने पे करा 1,03,000, 8,000 इस साल का एक्सेस जो आपने कभी नहीं किया। सर यू कैन यूज योर टेबल 9 फॉर टेकिंग द रिफंड। सर जिस चीज की करेक्शन कभी नहीं की, या तो वो DRC 03 ओरिजिनेट करेगा या फिर रिफंड ओरिजिनेट करेगा, बट व्हेन आई वाज मेकिंग दिस चार्ट, माय स्टाफ केम टू मी एंड सेड मैम आप एक एक करके केस ले रहे हो, जब हम प्रैक्टिकली डाटा फीड करते हैं हमें तो सब कुछ ही इकट्ठा मिलता है। So I asked them, सब कुछ इकट्ठा मिलता है मतलब, so that is why I made this combination for you. Please have a look on this combination once. Sir, what this combination have to say? सब कुछ किया कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सर मेरी बुक्स की एक्चुअल फिगर है 1,10,000, this. Please be with me for the combination. 1,10,000 मेरी बुक्स की फिगर थी, मुझे 7,000 की गलती पता लग गई थी कि मैंने 1 लाख तो मैंने दिखाई दिया हुआ था सर अपने 3B में, ये देखिए यहाँ पे 1 लाख हमने अभी देखा था कि 1,18,19 का है, 1 लाख तो मैं दिखाई चुकी थी, 7,000 की गलती मुझे पता लग गई थी जुलाई में कि मैंने सेल बढ़ा दी, 3,000 से पता लग गई गलत है, कम भी कर दी, सो नेट इफेक्ट 4,000। ये मैंने कब दिया 19-20 में, pertaining to 18-19, pertaining to 18-19। Now 6,000 का ऐसा, अब ये बना 1,04,000, 6,000 अभी भी ऐसा रह गया जो मैंने कहीं नहीं दिखाया। चले फिर से वही टेबल 4,
जो 3B में दिखा दिया प्लस जो कहीं नहीं दिखाया 6000. दिस विल कम टू माय टेबल 4. जो टेबल 4 का पेबल वही टेबल 9 में 1,06,000. टेबल 9 paid is freezed with the figure 1,03,000. that is already freezed. टेबल 10 में मैंने 19-20 में क्या करेक्शन की, 7,000 बढ़ाया, 3,000 कम किया. टेबल 14 में इसका नेट इफेक्ट 4,000 का शो करेगा. नाउ DRC 03 कितने के लिए भरना है, 6,000 के लिए. और सर अल्टीमेटली मेरा 1,04,000 बना इस साल का. मेरी लायबिलिटी थी 1,10,000. DRC 03 पेबल निकलेगा, 6,000 का डिफरेंस आएगा विच विल बी पेबल थ्रू DRC 03. सो व्हेन यू विल बी यूजिंग दैट एक्सेल शीट, you will get all the figures to be fitted in the relevant table 4, 10 and 11. और पेड और पेबल का जो डिफरेंस होगा वो पिछले साल का होगा प्लस इस साल का, या तो DRC 03 या रिफंड का होगा. So this was the entire mechanism for output. Similar way, if I move for the entire mechanism for input also, sir input में भी 3B में फिगर आ रही है 1,02,000. कैसे, 2,000 पिछले साल का इम्पैक्ट है जो कम या ज्यादा किया था. 1,00,000 इस साल का ITC है, 1,00,000 इस साल का ITC है, 2,000 पिछले साल का इम्पैक्ट दिया है. सो इसमें भी सेम केसेस बनेंगे. बट सर इनपुट्स के केसेस में आपका टेबल 6 फ्रीज्ड होता है, 6A फ्रीज्ड होता है, 8A फ्रीज्ड होता है. सो दैट इज वाई हमें इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट वी कैन डू इज, आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल. अगर तो सर सब कुछ ठीक था, अगले साल एडजस्टमेंट नहीं किया आपने कोई, तो मेरा टेबल 12 और 13 जीरो होगा. राइट, टेबल 6A मैंने आपको बोला था सिस्टम को नहीं पता लगता पिछले साल की एडजस्टमेंट क्या है. तो 6A में जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगी वो एंटायर 1,02,000 आएगी. 6B में आपने भी बाइफिकेशन जो देनी है वो एंटायर की देनी है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर. सर कई लोगों का इस पे एक डिफरेंट व्यू हो सकता है कि वो 6M में डाल दे 2,000 जो पिछले साल का था क्योंकि वो इस साल का नहीं था. बट लेट मी टेल यू, मैंने 6M कॉलम को भी यूज किया है. बट हियर इट गिव्स द मच मोर बेटर इफेक्ट्स देन टू शो पिछले साल का 2,000 का बाइफिकेशन इन एनी अदर. नो, आई सपोर्ट दैट 6A में पिछले साल की फिगर इंक्लूड करके आ रही है. तो जब आप 6B में बाइफिकेशन दें तो आप प्लीज पिछले साल की फिगर ऐड करके, अब तो बाइफिकेशन देना भी नहीं है, इनपुट सर्विस में आप सारा इनपुट में पूरा 1,02,000 ही शो करेंगे. जिससे इंस्ट्रक्शन कहती थी 6J शुड बी 0. यस, योर 6J इज 0. Your 6O will show the entire figure 1,02,000 which will be matching with 6A. right? सर इम्पैक्ट कहाँ आएगा, टेबल 8 में. टेबल 8 में सर मान के चल रहे हैं टेबल 8 में 2A में वही डाटा है जो आपका बुक्स का है, यानी 1,00,000 पूरा है. 6B जब वो कंपेयर करेगा तो वो पिछले साल का, क्योंकि 6B उठाएगा और 6B में पिछले साल के 2,000 का इम्पैक्ट होगा, वो यहाँ कंपेयर करने टाइम ये 2,000 पिक कर जाएगा. तो आप चेक कर सकते हैं 8D कॉलम में आपका डिफरेंस 2,000 का रिफ्लेक्ट करेगा जो कि आपके पिछले साल के टेबल 12 और 13 से मैच करेगा. सर ज्यादा कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है. द एक्सेल शीट that I have made already contains this formula, but what I'm sharing with you right now is how you will check the things when a return comes to you, whether it is to be done or how it is to be done, that can be taken care of. सर इसमें भी 4 केसेस हो सकते हैं. आपने शॉर्ट इनपुट लिया, पता लग गया तो आपने उसको टेबल 13 में करेक्ट कर दिया होगा. नहीं पता लगा, आपने एडजस्ट किया ही नहीं, तो सर ये लैप्स कर जाएगा, अब आप नहीं ले सकते. राइट, आपने ITC एक्सेस ले लिया, बुक्स में 92 था, आपने 1 ले लिया, अगले साल पता लग गया, करेक्ट कर दिया, आपने करेक्ट कर दिया, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा.
लेकिन अगर आपने करेक्ट नहीं किया, आपने एक्सेस आईटीसी लिया, 92,000 का बुक्स में था, आपने 1 लाख ले लिया, आपने एक्सेस लिया, करेक्ट नहीं किया, आपको आज ये 8,000 DRC 03 से पे करना पड़ेगा। और सर प्रैक्टिकली आता है अगेन कॉम्बिनेशन। मेरी बुक्स का आईटीसी था 1,10,000, 1 लाख मैंने 3B में ले लिया था, ये 4,000 का इम्पैक्ट मैंने अगले साल 19-20 में दिखा दिया था, और 6,000 का मैंने आज तक नहीं लिया। सर जो आज तक नहीं लिया 6,000 लैप्स कर जाएगा, और जो टेबल 8D है वो मेरे करंट ईयर और 2,000 का इम्पैक्ट नेट ऑफ करके 4,000 शो करेगा। तो सिंपली सेइंग, जो मेरे पिछले साल का इम्पैक्ट है वो मेरा टेबल 8D में आने दीजिए। आप इस फिगर को पिछले साल के साथ मैच भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में करंट ईयर का ये 8,000 जो लैप्स होना है, ऑफ कोर्स आपने कम लिया है तो 8D में फर्क आएगा ही 8,000 से, प्लस से 2,000 का इम्पैक्ट, लास्ट ईयर डिफरेंस, लास्ट ईयर डिफरेंस, लास्ट ईयर डिफरेंस, लास्ट ईयर डिफरेंस, वो हमेशा उतने से आपके टेबल 8D को इम्पैक्ट करे। सो ये तो हमने बात की टेबल GSTR 9 की। What about 9C also? सर इनपुट के इम्पैक्ट्स जो 9C में आएंगे, that will affect your table 12 and table 14. लास्ट केस ही देखते हैं, आपका इनपुट कितना था सर? 1,10,000, 2,000 पिछले साल का था, मैं यहां शो कर दूंगी। आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर, बुक्ड मींस बुक्स में जो पिछले साल में था, करंट ईयर में आपने क्लेम किया 2,000, 17-18 का आईटीसी, 4,000 जो इस साल का अगले साल किया वो यहां आ जाएगा। अल्टीमेटली 1,08,000, 1,02,000 आपने जीएसटी रिटर्न में लिया हुआ है, 6,000 आपकी वो फिगर है जो आपकी लैप्स करनी थी, आपने ली नहीं थी। दिस इज व्हाट माय टेबल 12 इज शोइंग हियर, द लैप्स्ड फिगर। एंड सेकंड आएगा टेबल 14 में, टोटल एलिजिबल आईटीसी था 1,10,000, आपने कितना लिया? ये 7J कॉलम ऑफ जीएसटीआर 9 से पिक करता है 1,02,000, 8,000 का इम्पैक्ट शो करेगा। कैसे सर? यहाँ प्रीवियस ईयर का इम्पैक्ट नहीं आया, 6,000 करंट ईयर का जो लैप्स होना है अनरिकंसाइल्ड, और 2,000 पिछले साल का। तो आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे 6,000 प्लस 2,000 कि 6,000 वो है जो मेरा लैप्स हो गया एंड 2,000 वो है जो मेरा प्रीवियस ईयर का था। राइट, विद दिस मैं आपसे पहले एक पॉइंट डिस्कस करूंगी, दैट इज योर ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस। सर दीज आर द पार्ट्स ऑफ जीएसटीआर 9। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल फिगर्स के साथ आपके लिए लिखी है, हाउ आई प्रेजेंट the comments and all. This is my client's figures, so you want you can refer to it, but जो spillover effects थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये देखिए, जैसे मैंने इंटरेस्ट DRC 03 के थ्रू पे किया, आई मेंशन दैट इन कमेंट्स एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे ज्यादा लास्ट में अपने आप को जो भी अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस थे जो मैंने बाद में निकाले, पे किए, दैट ऑल आई हैव कंसिडर्ड हियर। एंड व्हाट आर द ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन? सर इनकम टैक्स में भी हम एक ड्राफ्ट बना के चलते हैं। सर दिस यू नो 9C में उन्होंने हमारी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, ट्रू एंड फेयर की जगह ट्रू एंड करेक्ट कर दिया, ट्रू एंड करेक्ट की जगह ट्रू एंड फेयर कर दिया था। ड्राफ्ट सजेस्टेड ऑब्जर्वेशन के 10 points I have reproduced here for your ready reference, which you can give according to your client's data, कि ये 10 points में इंटरेस्ट हुआ है नहीं हुआ, 42 43 मीट आउट हुआ है नहीं हुआ, हमने चेकिंग सैंपल बेसिस पे की है, हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग these are the position, all these can be referred for in the draft observation. सर कई बार 9C अपलोड करने में हमें टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, सो वो टेक्निकल ग्लिचेस का क्या सोल्यूशन है, क्या आपके सिस्टम में सेटिंग्स होनी चाहिए, दैट आई ट्राई टू reproduce here for your reference. With this I end up my deliberation, but would like to share just one sheet with you कि जब मैं 9C I go for, so just a minute, 9C के लिए how I compile my client's data. Oh, I should have opened it a bit earlier because this sheet is थोड़ा सा bulky, so it takes some time to open up. I just share it with you, new share.
Yeah, it is taking time. Sir, ये sheet I will. Sir, just permit me to share this sheet. 1 second. It is just to show where here it is. सर व्हेन आई ये देखिए जब जो जैसे मेरे क्लाइंट है जब मैंने इनकी शीट बनानी है ये वही शीट है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी. आई मेक इट फॉर माय क्लाइंट. सिमिलरली आई मेक अ बुक्स रिको शीट ऑल्सो. सर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आउटपुट पिक करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ P&L एंड ऑफ कैपिटल अकाउंट. जो जो इनकम्स आ रही है आप उसको बाइफिकेट कर लीजिए, क्या टैक्सेबल है क्या नॉन टैक्सेबल है, विदाउट लुकिंग इनटू द 3B फर्स्ट एज पर योर बुक्स. क्या उनकी बाइफिकेशन है, जैसे क्लाइंट ने यहाँ रेंट रिसीव दिखाया है, क्या ये टैक्सेबल है, लाइबल टू GST. इन माय क्लाइंट सेल देयर वाज अ ब्रांड सेल जो उसने दिखाना ही भूल गया. ब्रांड सेल पे 18% टैक्स है व्हिच ही हैज नॉट शोन. गेस्ट हाउस चार्जेस उसने चार्ज किए हैं. इस केस में लीकर था, कितनी नॉन GST सप्लाई है. सो अल्टीमेटली आई बाइफिकेट द वैल्यूज इनटू टैक्सेबल, exempt एंड नॉन GST. Then I make it a total and match with my P&L account. Then I go to this sheet to check whether my books of accounts are matching with 3B or not. Apart from this, like I do it for the expense side, we can do it for income side, we can do it for expense side also. Take all the expenses and check. सर जैसे यहाँ फ्रेट था, मेरे क्लाइंट ने फ्रेट इंक्लूड किया था परचेजेस में, बट दैट डज नॉट लोअर माय लायबिलिटी ऑफ पेइंग GST ऑन रिवर्स चार्ज ऑन इट. सो व्हेन यू हैव दिस प्लीज टेक द P&L बाइफिकेशन. और जहां जहां मुझे डाउट था आई मार्क द एक्सपेंसेस लाइक स्टाफ वेलफेयर एटसेट्रा कि उनपे है या नहीं. डू टेक द डेप्रिसिएशन चार्ट ऑल्सो टू चेक द इफेक्ट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स एटसेट्रा. HSN वाइज डिटेल्स मस्ट ऑल्सो बी टेकन कि क्या प्रोडक्ट है और उसके ऊपर HSN करेक्टली चार्ज है या नहीं है. सो RCM प्रोविजन, CSR एक्सपेंसेस, ऑल दीज शुड बी मार्क्ड एंड चेक. एडवोकेट सर्विस, फ्रेट चार्जेस, लीगल चार्जेस फॉर RCM शुड बी चेक. Right, so with this I end up my deliberation and thank you so much for such a patient listening full of figures. I am indeed thankful to you. With this I stop sharing my screen and I hand over to Amish. Thank you, Aanchal ji. We had some question answers, so we can take first that. Yeah, sure, sir. Sure. Kuresh sir is there? Hello. Hello. Kuresh sir is there? Okay, fine. I will read his question. First question was difference in 8D on account of ITC claim for financial year 17-18 appearing in GSTR 3B of financial year 18-19. Wait. Yes. सर का क्वेश्चन शायद ये था कि हाउ वी विल जस्टिफाई इट टू द ऑफिसर. व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग देन आई कुड रीड इट अ बिट. सर आपके पिछले साल 17-18 का टेबल 10 एंड टेबल 11 वो जो नेट डिफरेंस निकलेगा वही आपका पिछले साल का होगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशंस एट योर एंड. सर लेट मी टेल यू, द गवर्नमेंट हैज नॉट कम अप विद एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन how to deal with the figures of 17-18. Neither they have given any basis. So we must prepare the presentations, the reconciliations at our end until or unless any clarification comes from the government. So you have to prepare a RICO and show it while the time of assessment. Okay, fine. Next query was by Aditya Maheshwari. In case ITC seen in GST 2A but credit not taken due to non-receipt of goods, so any effect to be given or any concern during audit? ITC seen in 2A but आपने क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि सर आई थिंक सो आदित्य जी इज रेफरिंग टू चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. व्हाट हैपेंस, सामने वाले ने मार्च में 2A में दिखा दिया, गुड्स डिस्पैच हो गए, लेकिन मुझे वो गुड्स नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में मैंने रिसीव किए. सो नॉन रिसीट ऑफ गुड्स की वजह से मैंने उस पीरियड में नहीं लिया जबकि वो मेरे 2A में आ रहा है. सर आप उसको अप्रैल में ही बुक करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ही बुक करेंगे. वो डिफरेंस आपके 8D का पार्ट होगा बट वो लैप्स नहीं करेगा कॉलम. बट अगर आपको गुड्स कभी रिसीव ही नहीं हुए, द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16
cannot be met for and the credit will not be eligible. Just a rejoinder, the purchase is booked in the books of account, but ITC is not taken in 3B because the goods were received in next year. So in while, sorry. Sir, your voice is echoing a bit. Just, sir, can you please repeat? Actually, it was not properly audible. ITC has been booked in the financials in the books of accounts, but the goods were received in next year. What you had mentioned. So in reconciliation to 9C, we mentioned that this is difference as per books and as per. Sir, yes, you are talking about 9C. If you are referring to 9C, as I told you कि आपका year bifurcation था, आपने sir अगर मैं books में, if I go by the provisions of books, you are saying that you have in that stock in your books of accounts, whereas there is no receipt of goods. Actually, that has been received in next year. So the difference will come. You can put a note in your GST 9 pertaining to the same. But in GST, the credit will be eligible only and Correct. only in the next year. Credit has been taken in next year only, in 3B, in Yes. April only. Next question is, ma'am, from Chandresh Shah. What should be the professional fees for 9C for 31st March 2019, where turnover of client is 12 crores? Can we have Sir, fee depend upon the client and your attitude. So it's you who is going to add value to your client. If you are going to show him what the flaws he has done and what can be the consequences of that, Correct. that determine your fees. So you can charge as much as you can. Nikhil sir is there? Nikhil sir, you can unmute yourself and ask the question. Hello, am I audible? Yes, yes. Sir, those who have asked for my number, it is already there in PPT Sachinji, so you can refer, or if time persists, Hello, you am can I ask audible? the query right Yes, now. yes, also. Nikhil. Sorry, I have a question relating to ITC 03. I have a client who switched over from regular composition scheme from 1st April 2020. Now for stock which he had in hand, the ITC has to be reversed and the amount has to be paid to ITC 03. Now when I'm trying to fill the Exactly. ITC form, it is asking me for the bill-wise details. Now when I'm checking, 100%, sir. it's almost 10,000 items. And it is very difficult to pinpoint each bill-wise against which bill that item has been purchased. Okay, let me come to it. Sir, even I filed GSTR ITC 03 for my client recently for the year 20. It asks for the bill-wise detail, but if it is not available, I did it bill-wise because otherwise it asks for a CS certificate, right? So if you don't have that, so you can furnish a CS certificate with respect to that. Otherwise, you have to give the detail bill-wise, and that too to explain कि कौन सा stock VAT regime का था और कौन सा post VAT regime GST period का था. That asks up to that level also. But if you do not want to give it bill wise, then the CA certificate must be attached to it. With CA certificate, just the total figure is sufficient. Sorry? With a CA certificate, only the total figure is sufficient. Yes. When you are not able to furnish the bill wise information, you can attach the CA certificate. Okay, thank you. And one more last question was there. Goods received in April 2020. Invoice dated 31st March 2020. Can we account the purchase in 2019-20 goods in transit? Sir, for GST purpose, it is to be counted for 1920 only, as already told. The credit for will not. Okay, he is saying April 20. Goods received in April 20, invoice dated 31st can be purchased in. Sir, you cannot take the credit in 1920 because the goods are received in April 20, subject to the provisions of section 16(2). The receipt of goods is mandatory, so credit will be eligible in April 2020 only. But ma'am, full purchase to be booked in the same year or next year? Sir, this is an income tax or an accounting question, not a GST perspective question. Where it is to be booked, that can be referred for the accounting and GST
tax Okay. provisions. Okay. But can book as and in GST, mention it as will goods in come transit. only in April Yeah. 20. But credit would be in April only, as mentioned by me. April 2020 only. Yeah. One more question from Khyati. Is registration in MSME is required to claim GST audit 9C exemption if turnover exceed 2 crore but below 5 crore? It No, is Khyati, not as such. MSME registration is not required directly to avail the benefit. That can be checked from your other tax turnovers. So MSME as of now is not. आजकल जब GST वाले number allot कर रहे हैं, they are checking a lot more things. In one of my client case in Delhi or somewhere related to Gurgaon, we got a notice that the trademark has not been registered. So they are a bit extending. I know that is a bit doubtful, but going to other acts. But as of now, the registration in MSME is not to be considered to check the exemption limit. You can directly go for it pertaining to your the turnover shown in tax audit or in corporate records. okay, fine, madam. Everything, all the questions are done, and it was well completed in time. Now I request CA Rajesh Poddar to kindly give the vote of thanks. Yeah. Good afternoon, everybody. Khyati ji, yeah, thank you. Yeah, good afternoon, everyone. What a fantastic presentation, CA Aanchal Kapoor. Too good, ma'am. To be frank, I do not specialize in GST practice, but the way you explain in Excel summary form, GST 9C, it's too good, ma'am. It was really superb. I, Rajesh Poddar, on behalf of Andheri Oshiwara Study Circle, present a hearty vote of thanks to today's speaker, CA Aanchal Kapoor, with a loud applause. Further, I request Amish ji to please invite her to Mumbai after lockdown opens for one more live session at our Raija Classic Club on GST. Sure. Thank you, everybody. Yes, good. Thank you, Aanchal ma'am. Thanks for coming, spending time on Sunday. Thanks a lot, sir. And thanks a lot. Enjoy Sunday. Have a break. Okay, bye-bye, and thanks a lot. Bye, ma'am.